Yeah, welcome back, students. Let's move on to the next set of questions. Question number 6. Balance sheet of Prabhakar Rao Limited. It talks about 8% redeemable preference shares of rupees 10 each. Again, it's fully paid up. That means as per section 55, I don't have to convert it into partly paid as fully paid. Okay? Yeah. So in exam, you have to pay attention whether it is fully paid or whether it is partly paid. Because if it is partly paid, तो आपको उसको fully paid करना पड़ेगा, right? As per section 55 of your Companies Act 2013. इक्विटी शेयर कैपिटल कितना है? 13,50,000, 10 each fully paid. सिक्योरिटीज प्रीमियम दिया है, P&L अकाउंट दिया है, डायरेक्टर्स लोन दिया है एंड सैलरी क्रेडिटर्स दिया है. Okay, fixed assets, investments, long-term bank balance, other current assets, long-term trade receivables, 20,000. Okay, and then they have given you certain description. Company exercised the option to redeem the preference shares at 10% premium. Okay, for this purpose, it issued 67,500 rights shares of rupees 10 each at a premium of rupees 10 per share. तो ये है क्या मेरा fresh issue. Okay, this is my fresh issue. Then the right shares, that is equity shares, were fully subscribed and cash was received. Investments were sold for rupees 5,13,000 और इधर investments कितना है? 4,05,000 और कितने में बेचा आपने? 5,13,000. तो obviously profit किया है. All payments were made to preference shareholders except to a person holding 675 shares who was not traceable. Okay, yeah. So at the end, when you make the payment, 675 shares पे payment नहीं करना है. Okay, yeah. So obviously we will start with our basic working note where we talk about redemption on preference shares. So my preference share capital is how much as per my balance sheet? It is 13,50,000. Okay, yeah. So 13,50,000 और इस पे प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन है. प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन कितना बोला है? 10%. ओके, सो लेट्स चेक. ओके, या 10% प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन. तो 13,50,000 का 10% is 1,35,000. Add this to 13,50,000. So just a minute. 13,50,000 plus 10%. It makes to 14,85,000. So this amount is due for repayment. Correct? Now, out of this, they are saying that balance will go to CRR. Yeah. Fresh issue कितने का हुआ है? Fresh issue हुआ है 67,500 shares का. 67,500 number of right shares. Okay, quantity दिया है multiplied with 10 rupees. कितना हो गया? 6,75,000. Right? Minus 13,50,000. कितना बचा? 6,75,000. बैलेंस बचा जो किधर जाएगा? CRR में जाएगा. बराबर. और ये वाला जो पार्ट है प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, ये एडजस्ट होगा P&L में. करेक्ट? तो हो गया सब सेट एज पर सेक्शन 55. ठीक है? या. Now let's move on to the journal entries. So the first journal entry that we are going to pass is sale of investments at profit. You can even go with this adjustment first. I mean this transaction first. Okay, it doesn't make much difference. You can even pass fresh issue का entry first or you can pass sale of investment का entry first. Correct? तो 4,05,000 का investment है जो आपने 5,13,000 में बेचा. तो 5,13,000 minus 4,05,000. So 1,08,000 का आपको profit हुआ है. So your journal entry will be cash bank account debit to investments. This is the cost, and profit 1,08,000. ठीक है? Then next will be fresh issue of equity shares. Correct? Yeah. So cash bank debit to equity share capital to securities premium. बराबर? Because वो लोग ने बोला है that your fresh issue is at a premium of rupees 10 each. Correct? So yeah. 67,500 right shares into 10. 6,75,000. फिर 67,500 into एक शेयर पे प्रीमियम कितना मिल रहा है? 10 रुपया. तो 6,65,000 दोनों को ऐड करो. सो आपको कितना पैसा मिला है? 13,50,000 आउट ऑफ फ्रेश इशू. ठीक है?
नेक्स्ट अमाउंट पेबल ऑन रिडेम्पशन, तो हमारा आई जस्ट शो यू दिस ना, या दिस वर्किंग नोट, कितना आया आंसर 14,85,000, करेक्ट, या. So my journal entry will be preference share capital account debit, premium on redemption account debit to preference shareholders account. Okay, as per the working note, 13,50,000 plus 1,35,000 makes it 14,85,000. Okay, then creating CRR out of divisible profits. Okay, so how much CRR I am creating as per working note number 2? I am creating CRR of 6,75,000. See this one, this working note I am talking about. So this is the CRR that I am creating. Okay, PNL account debit to CRR. Okay, then adjusting premium on redemption. So PNL account debit to, you can even write to premium on redemption, or you can even write premium on redemption of preference shares. It doesn't make a difference. It's one and the same term. Okay, so this is also as per my working note number 1. See, CRR में मैंने कितना डाला, मैंने CRR में डाला 6,75,000, और PNL में मैंने कितना डाला, PNL में मैंने डाला 1,35,000. Okay, so all answers to your journal entry, I mean all figures to your journal entry will be out of the working note only. See, 1,35,000. Then entry for payment on redemption, correct? तो अभी जब आप redemption करोगे तो या, तो just try and understand one thing students. या मैं आपको बैलेंस शीट दिखाती हूँ, या इधर देखो ध्यान से, आपका कितना है ये 13,50,000, बराबर ना? प्रेफरेंस शेयर्स कितना है 13,50,000, टोटल शेयर कैपिटल डिवाइडेड विद एक शेयर का कीमत कितना है 10 रुपया, तो टोटल प्रेफरेंस शेयर्स आपके पास कितने हुए 1,35,000 प्रेफरेंस शेयर्स हुआ. समझ में आया? ओके, सो टोटल प्रेफरेंस शेयर्स आपके पास हो गया कितना स्टूडेंट्स 1,35,000 प्रेफरेंस शेयर्स. ओके, जिसमें से जस्ट अ मिनट, या 13,50,000 जिसमें से 1,35,000 प्रेफरेंस शेयर्स. ओके, जिसमें से 675 वर नॉट ट्रेसेबल, मतलब इन लोगों को आप पेमेंट नहीं करने वाले, इनके शेयर्स रिडीम नहीं होंगे. तो 1,35,000 में से 675 माइनस कर दो, तो कितना बचा 1,34,325. तो आप इतने ही शेयर्स का पेमेंट करने वाले हो. समझ में आया? एक शेयर का कीमत कितना है प्रेफरेंस शेयर्स का 10 रुपया, और इस पे प्रीमियम कितना है 10%. तो 10 रुपए का 10% निकालो, कितना होता है 11 रुपया. ओके, 11 रुपया मल्टीप्लाइड विद दिस नंबर ऑफ शेयर्स. ओके, मल्टीप्लाइड विद 1,34,325. कितना आया आंसर 14,77,575 रुपीज आप पे करोगे. I hope this is clear to everyone. Okay, yeah. Okay, so I hope this is clear to everyone. ये 11 rupees कैसे आया समझ में आया ना? This is the explanation to this 11 rupees. Okay, yeah. Right? तो actually आपको पैसा कितना देना था 14 लाख. हाँ, आपको कुछ एक अमाउंट भरना था ना, या 13,50,000 प्लस 1,35,000, 14,85,000 रुपीज आपको पे करना था, पेमेंट करना था, बराबर. CL शो, ये देखो 14,85,000 आपको पे करना था, बट आप कितना पे कर रहे हो 14,77,575. क्यों? क्योंकि आपके 675 शेयर्स तो नॉट ट्रेसेबल है, इनको पैसा मिलने ही नहीं वाला है. ओके, इसलिए आप कम पे कर रहे हो. आई होप दिस पार्ट इज क्लियर टू एवरीवन. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड इसका बैलेंस शीट कैसे बनेगा आफ्टर रिडेम्पशन. ओके, so balance sheet will be a short and a sweet one. Yeah, as you start with equity share, that is shareholders funds. So first comes my equity share capital. ध्यान से सुनो, 1,35,000 का मेरा equity shares है, प्लस मेरा rights shares है 67,500. ओके, तो 2,02,500, और एक शेयर कितने का है 10 रुपए का, तो मेरा शेयर वैल्यू कितना हो गया 20,25,000. ओके, now this I will add in notes to accounts here. Yeah, see, clear? 1,35,000 yeah, 1,35,000 का मेरा preference shares है, करेक्ट, और
फ्रेश इशू से 67,500, राइट? तो कितना हो गया? 2 lakh to 500 multiplied with 10 rupees. So my answer is yes, 20,25,000. Okay, that is what I have written here. 20,25,000. Next comes my reserves and surplus. My notes to accounts number 2. First comes my securities premium. ठीक है, तो बैलेंस शीट में कितना है देखते हैं. बैलेंस शीट में सिक्योरिटीज प्रीमियम कितना दिया है? 40,500. और अभी जर्नल एंट्री में देखते हैं सिक्योरिटीज प्रीमियम कितना है. ये रहा सिक्योरिटीज प्रीमियम कितना, 6,75,000. दोनों को ऐड करो, 6,75,000 प्लस 40,500. सो माय आंसर इज 7,15,500. ठीक है, रिजर्व्स एंड सरप्लस ये रहा 7,15,500 सिक्योरिटीज प्रीमियम. Next will be P&L account. Okay. So again, same logic. First go to your balance sheet, old balance sheet. में देखो P&L कितना है? 13,50,000. ठीक है, एक लाइबिलिटी साइड है, मतलब क्रेडिट बैलेंस है. ठीक है. तो अभी देखते हैं P&L मेरा. हाँ, ये देखो क्रेडिट बैलेंस 1,08,000, मतलब ये ऐड होगा. ठीक है, तो 13,50,000 1,35,000 प्लस 1,08,000. ठीक है, और P&L किधर है? ये रहा. ये डेबिट है तो माइनस हो जाएगा, माइनस 6,75,000. ठीक है, फिर P&L वापस माइनस, यार एक मिनट है. It was how much? 13,50,000 plus 1,08,000 minus 6,75,000 minus 1,35,000. ठीक है, डेबिट. और कहीं है P&L? नहीं है. That's it. हाँ, that's it. तो मेरा P&L का आंसर कितना आ रहा है? 1,35,000. 1,35,000. Any other P&L I missed? Profit element 1,08,000. 1,35,000. It's right. 13,50,000 प्लस ये रहा प्लस 1,08,000. सीधा प्लस हो जाएगा ना, वो क्रेडिट है. प्लस फिर माइनस 6,75,000 माइनस 1,35,000. 13,50,000 plus 1,08,000 minus 6,75,000 plus 1,35,000. This reserves and surplus is 20,38,500. This 1,35,000 I put minus 1,08,000 CRR, so it is 6,75,000. Just a minute. 7,15,500 plus this makes me 6,75,000. Okay. 20,38,500
6,48,000. This is added, this is 14,58,000 minus 8,10,000. 6,48,000. There is one P&L that I will take an item over here. Let's see. Yeah. Directors, yeah. Securities premium may we have put the balance 13,50,000. Makes it to 13,50,000 plus 1,08,000. Okay, minus your P&L 6,75,000 minus this 1,35,000. Yeah, it is 6,48,000, this figure. Okay. So this figure comes to, yeah, this is minus. Okay, this amount is minus. Because you're going to subtract. It is in the debit side. This will be minus. And then this is your answer, 6,48,000. Correct? Yeah. Erase this down. Yeah. So you just add the balance sheet figure. ये credit था add. ये debit में था और ये भी debit में था. तो ये भी yeah minus होगा. Then you will get 6,48,000. And CRR में as per working note you have transferred 6,75,000. तो ये रहा आपका securities premium एक और एक ये ऐड हो जाएगा. ओके, ये एक ऐड हुआ, फिर ये 6,48,000 ऐड हो जाएगा, फिर एक ये 6,75,000 ऐड हो जाएगा. करेक्ट? राइट. तो 6,48,000 प्लस 7,15,500 प्लस 6,75,000 कितना हुआ? 20,38,500. ठीक है, तो ये इधर जाएगा आपके as per notes to accounts, reserves and surplus 20,38,500. Right? Then come to current liabilities. Notes to accounts number 4. Okay, current liabilities. So that is how much? 1,41,925. Your current liability. You have in that only director's loan 50,000. 50,000. Okay. Current liability may you will take this part, students. I'll tell you. ये वाला पार्ट जो आपने पे नहीं किया ना, हाँ, ये 675 नॉन ट्रेसेबल था, राइट? हाँ, तो 675 into 11 rupees, 7,425. So this figure you should put here. Wait, I'll show this figure to you. Current liability. Here, directors loan है और ये sundry creditors 1,34,500. Okay, 1,34,500. So this reserves and surplus is notes to accounts 3 only. इसमें 1, 2, 3 ये तीनों को ऐड किया है. ठीक है.
So notes to accounts 3 you need to prepare. वो बनाया नहीं है. Yeah. I'll show you how it will be paid. So how much it was? 7425 plus 7425 plus 1,34,500 plus 1,34,500. 1,41,925. Okay. So should I write it here? Notes to accounts 3. Notes to accounts 1, notes to accounts 2, notes to accounts 3. I'll make it here. Okay. That is your current liability. Okay. Here. Current liability. तो इसमें क्या क्या आएगा? इसमें आपका वो अदर करंट क्रेडिटर्स आएगा. ओके. योर क्रेडिटर्स कितना था? 1,34,500. और एक आपका वो आएगा नॉन ट्रेसेबल शेयर्स वाला. ओके. वो नॉन ट्रेसेबल. ओके. कितना? 675 shares into 11 rupees. So 7425. ओके. इसका टोटल ये आएगा. ठीक है. 1,41,925. 1,41,925. 1,41,925. Okay. 7425. 1,41,925. See here. It matches. 1,41,925. Okay. Notes to accounts 3. And notes to a non-current liability, may I have only bank loan or director's loan with me. Yeah. Yeah. Point number 7. Notes to account 7, director's loan 50,000. Okay. Here. Director's loan 50. You can even do this notes to accounts 4 karke if you want it in order, or you can do it. Yeah. Then assets may I have current, non-current assets may I have fixed assets, which is given 25 lakhs in the old balance sheet. Then non-current assets ke liye I'll have to do the working note, notes to accounts 4, which has long-term trade receivables of 20,000. Okay. Yeah. Long-term trades receivables. Then current assets may have cash and cash equivalents and other current assets. Okay. Notes to account 6. Other current assets 10,50,000, which is given in the question. I mean in the balance sheet 10,50,000. ठीक है. Then cash and cash equivalents कैसे निकालेंगे वो भी मैं बता देती हूँ. That is also easy. पहले आप देखो बैलेंस शीट में कितना कैश बचा है. बैलेंस शीट का कैश कितना है? 3 lakhs. ठीक है. चलो लेट्स स्टार्ट. 3 lakhs एसेट साइड में मतलब डेबिट बैलेंस है. ठीक है. जहां भी कैश वर्ड है वो मैं लूंगी. तो ये रहा मेरा 5,13,000 कैश डेबिट, तो ये भी ऐड होगा. ठीक है. तो 3 lakhs प्लस 5,13,000. नेक्स्ट कैश ये रहा 13,50,000 डेबिट, ये भी ऐड होगा प्लस 13,50,000. नेक्स्ट कैश क्रेडिट में है, माइनस होगा, माइनस करो, माइनस 14,77,575. So 6,85,425 should be my answer. Cash and cash equivalency 6,85,425. और ये आंसर कैसे आया? ऐसे जो भी मैंने सिखाया आपको. ओके. ओल्ड बैलेंस शीट का फिगर 3 lakhs, add debit, less credit. Okay. Yeah. See, same figure as here. Right? And your balance sheet should tell you, obviously. Right? 20,25,000 plus 20,38,500 plus 1,41,925 plus 50,000. 42,55,425.
Same thing on the asset side. Yeah, 25 lakhs plus 20,000 plus 6 lakh 85 425 plus 10 lakh 50,000. Okay, it has to die. Okay, so I hope this part is clear to everyone. After redemption वाला balance sheet, आपको balance sheet का figure देखना है, old balance sheet, और journal entries में देखना है add less क्या हुआ है accordingly, और आपको ये figures मिलेगा. कुछ amount आप directly balance sheet से भी ले सकते हो, तो notes to accounts की जरूरत नहीं है. Okay, yeah. So next lecture we'll come up with a new type of question. Huh? Yeah. This is a current liability because this 675 क्या बोलते हैं राइट शेयर्स जो 675 लोगों को आप नहीं पे करने वाले हो. क्यों? क्योंकि वो ट्रेसेबल नहीं है. तो फ्यूचर में अगर वो ट्रेसेबल हो गए तो यू आर लायबल टू पे टू देम. ओके, सो राइट नाउ यू पुट देम अंडर करंट लायबिलिटी. सिंस दे आर नॉट ट्रेसेबल यू आर नॉट पेइंग देम, बट फ्यूचर में यू आर लायबल टू पे देम. ऐसा थोड़ी है कि फ्यूचर में तुम उनको पे नहीं करोगे, राइट? या, till then, happy learning.